Hello students, how are you? So today I am back with the second lecture of English Standard 8 Chapter 2 Olive Ridley Sea Turtles. So first of all, let's revise about the first lecture that we completed recently. I hope you would have understood that. Now dear students, we learnt about how we have to protect the endangered species and about what is called a volunteer holiday, that is doing something for nature. We started with the mail which was sent by Nofia sharing her experience when she went for a volunteer holiday. So she wrote about what all she learnt about the Olive Ridley sea turtles. So now dear students, let's continue with our chapter. This is the second mail which was the reply given by Satyabrata to Nofia sharing his views and knowledge which he acquired from the project he completed on Olive Ridley sea turtles. So let's begin with the second email. Now here he has written Nofia's email ID first, nofia@yahoo.com. Subject reply for Olive Ridley sea turtles. Now he started, Dear Nofia, it was nice reading your email, and guess what? My state Odisha is also the breeding ground for the Olive Ridley sea turtles. Now what Nofia is giving the reply is telling ki it was nice reading your email, and guess what, he is telling to guess her that my state where he is staying in Odisha is also the breeding ground. Breeding ground means it's a place where wild animals go in order to produce their babies. सो उन लोग वहाँ जाते, ब्रीडिंग ग्राउंड किसे कहा जाता है? जिस जगह पे वो एनिमल्स जाते हैं अपने बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए. So, in fact, Gahirmatha Beach is the world's most important nesting area for the Olive Ridley turtles. It means that ये जो बीच है गहिरमथा बीच वो वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग एरिया है जहाँ जाके ये ऑलिव रिडलेस अपने एग्स ले करते हैं. देन अनदर इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट ऑन द ऑलिव रिडलेस. और वो क्या बता रहा है कि एक क्या कोइंसिडेंस है कि उसने भी अभी अभी एक प्रोजेक्ट ख़त्म किया है जो किसके ऊपर था? ऑलिव रिडलेस पे था. डिड यू नो दैट द ऑलिव रिडले इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ टर्टल. फिर वो उसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए कह रहा है कि तुम्हें पता है कि ऑलिव रिडले सबसे छोटा स्पीसीज है टर्टल का. An adult olive ridley is around 65 centimeter and weighs less than 40 kgs. Then he is telling that olive ridley is around, what is the length of that olive ridley? That is 65 centimeter and उसका weight क्या है? Less than 40 kg. The hatchlings you saw must have weight less than 20 gram. देन ही इज़ टेलिंग कि दो हैचलिंग्स थे उसके जो बच्चे थे जो तुमने देखे उसका वेट लेस देन 20 ग्राम्स था. इजंट इट आयोनिक दैट द ऑलिव रिडलेस विच आर एन एबेंडेंट मेराइन स्पीसीज फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ द एटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस आर एंडेंजर्ड. सो डियर स्टूडेंट, उसे कह रहा है कि इजंट इट आयोनिक. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयोनिक? आयोनिक मतलब स्ट्रेंज. वाई स्ट्रेंज? बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज एक्सपेक्टेड. वो ये कह रहा है कि है ना, ये कुछ अलग अजीब किस्म की बात है क्योंकि जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे ये बिल्कुल अलग है. एंड जो ये ऑलिव रिडले जो मेराइन स्पीसीज़ है जो एटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशंस में पाए जाते हैं आर एंडेंजर्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, इन द स्टार्टिंग ओनली आई एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग ऑफ एंडेंजर्ड. इट मीन्स हैविंग वेरी स्मॉल नंबर्स लेफ्ट एंड पॉसिबली मे नेवर बी सीन अगेन. मीन्स अब उस ऑलिव रिडले के बहुत कम स्पीसीज़ बचे हैं. This is because
there are very few nesting sites remaining in the world and this has affected the olive ridley population. ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि there are very few nesting sites जहाँ पे वो जाके अपने eggs ले कर सके, वो बहुत ही वर्ल्ड में कम है and because of that उनका ये population affect हुआ है. So dear students, on the explanation of these two paragraphs, I would like to ask you some questions. So are you all ready to answer me? So my first question is, which beach is the most important nesting area for olive ridley sea turtles? I repeat my question, dear students. Which beach is the world's most important nesting area for olive ridley turtles? Yes, it's correct. It's the Gahirmata beach in Odisha. Now, my next question is, where are olive ridleys found? I repeat my question. Where are olive ridleys found? Yes, they are found in the warm waters of the Atlantic, Pacific and Indian Ocean. So students, now let's proceed on to our next page. That is, he is continuing his email over here. What you witnessed in Chennai and what I have only read about is a unique behavior called aribada और मास नेस्टिंग. ना वो उसे बता रहा है कि जो तुमने चेन्नई में देखा एंड मैंने जो पढ़ा है इस प्रोजेक्ट में वो एक यूनिक बिहेवियर है. उसे कहा जाता है अरिबडा और मास नेस्टिंग, मतलब एक साथ बहुत सारे टर्टल्स बहुत सारे एग्स ले करते हैं. आई एम श्योर you know by now that once a year hundreds of female olive ridleys migrate together over thousands of kilometers. They come back to the very beaches where they were hatched to lay their eggs. इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें पता है कि once in a year जो फीमेल ऑलिव रिडलेज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर तक. और वो कहाँ आते हैं? दे कम बैक टू देयर वेरी बीचेस वेयर दे वेर हैच्ड, जहाँ उनको हैच किया गया, टू ले देयर एग्स, अपने एग्स ले करने के लिए. वन फीमेल ऑलिव रिडले lays about 80 to 120 eggs which hatch after 45 to 60 days. Now dear students, एक फीमेल ऑलिव रिडले है वो 80 से 120 एग्स ले करते हैं एंड वो कब हैच होते हैं? 45 टू 60 डेज के बाद. डिड यू नो दैट दे ले एग्स ओनली एट नाइट? कब वो एग्स ले करते हैं? ड्यूरिंग नाइट टाइम. एंड दैट इन इंडिया एरिबडाज ऑकर बिटवीन सितंबर एंड मार्च, एंड उनका वो टाइम पीरियड कब होता है? बिटवीन द मंथ ऑफ सितंबर एंड मार्च. Unfortunately, adult turtles are killed for their skin or meat. They often get trapped in fishing nets and their flippers get cut off. वो कैसे मारे जाते हैं? अडल्ट टर्टल्स जो है उन्हें उनके स्किन और मीट के लिए मारा जाता है. और कुछ टर्टल जो फिशरमैन नेट्स, फिशिंग के लिए नेट्स लेके जाते हैं उसमें फंस जाते हैं एंड उनके फ्लिपर्स जो होते हैं वो कट हो जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम आर सीवियरली wounded and they drowned. And because of the cutting of the flippers they get wounded, मतलब उन्हें बहुत चोट लगती है, and they drown मतलब वो डूब जाते हैं. Turtle eggs and hatchlings are eaten by crabs, dogs, snakes, birds and trampled on by people. और टर्टल्स के जो एग उन्होंने ले किए होते हैं वो कभी कभी कौन खा जाते हैं? क्रैब्स है जो बीच पे होते हैं, डॉग्स, स्नेक्स या बर्ड्स, या कोई लोग जब उस पर चलते हैं तो उनसे वो ट्रैम्प्ड हो जाते हैं. ट्रैम्प्ड ऑन मीन्स दे आर, उसके ऊपर लोगों के पाँव पड़ने से वो हेवीली या रफली उनके पाँव जब पड़ते हैं तो वो कुचल जाते हैं. देन नेक्स्ट, hatchlings instinctively means what, dear students? Walk to the sea. Instinctively means in a very natural way, using the knowledge and abilities they are born
with and not through training. They don't get any type of training, but they walk towards the sea after hatching in a very natural way. They are guided by the starlight reflected by the वेव्स. रात को जब स्टार की लाइट दिखाई देती है उससे उनको गाइडेंस मिलता है एंड जो वेव्स की तरफ उन्हें ले जाता है. बट द स्ट्रीट लाइट्स कंफ्यूज देम एंड दे वॉक टूवर्ड्स द शोर. बट कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट होती है उस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड पानी में जाने के बदले वो शोर की तरफ वापस आ जाते हैं. देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑन लैंड आर वेरी स्लिम. It means, what do you mean by their chances of survival on land are very slim? That is, there is very little possibility. बहुत ही कम possibility होती है उनके बचे रहने की. I am glad you went on a turtle walk to help the olive ridleys. So सत्यव्रता नोफिया को कहता है कि I am very happy कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया and you went for a turtle walk to help the olive ridleys. Then he is saying that school is going to reopen on 4th January 2017 and it is already time for the final exam. I will write about my resolution soon. He is telling अब मेरी स्कूल रीओपन होने वाली है and it is time for the final exam also. So he is telling that मैं अपने resolution के बारे में तुम्हें जल्दी लिखूँगा. By the way, the olive ridleys are so called because of the color of their heart-shaped shell and H. Ridley who discovered the species. वो उसे और एक इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि ऑलिव रिडलेस को उनका नाम कैसे मिला, बिकॉज ऑफ द कलर. उनका जो कलर है ऑफ हार्ट शेप्ड शेल उस वजह से और H. रिडले के वजह से जिन्होंने इस स्पीसीज को डिस्कवर किया. आई हैव अटैच्ड अ पिक्चर आई ड्रू विद दिस मेल. फिर वो कहता है कि मैंने एक ऑलिव रिडले का पिक्चर ड्रॉ किया है, वो मैं इस मेल के साथ अटैच कर रहा हूँ. लव सत्यव्रता. देन ही इज एंडिंग अप हिज ईमेल. सो स्टूडेंट्स, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पार्ट विच आई एक्सप्लेन्ड यू. नाउ माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू दे कम बैक टू द बीच वेयर दे वेर हैच्ड? I repeat my question, why do they come back to the beach where they were hatched? Yes, dear students, they come back to the beach where they were hatched to lay their eggs. Now, the next question is, when do the laid eggs hatch? I repeat my question, dear students, when do the laid eggs hatch? Yes, the laid eggs hatch after 45 to 60 days. Now, come to the next question. How do the hatchlings walk to the sea? Can anybody tell me? How do the hatchlings walk to the sea? Yes, the answer is they walk towards the sea guided by the starlight reflected by the waves. Then my last question is, why was the olive ridleys so called? From where did they get their name? Yes, very nice. Because of the color of their heart-shaped shell and H. Ridley who discovered the species. Very good, children. Now I hope you would have understood the chapter. I end up my lecture with this and the chapter is completed. Thank you, dear students.